Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Learn with Sahira. In this video, I'm going to give you the complete and clear explanation of unit number 2 from the subject RDBMS, which is for degree 3rd semester Bcom Computer Application students. By watching this video till end and listening to me carefully, definitely you will be perfect with unit number 2. So watch the video till end. If you're new to our YouTube channel Learn with Sahira, subscribe it for more videos and don't forget to share this video with your friends too. Students, I have already made all subjects a damn sure important question and answers notes which are very easy, simple and clear to understand, ready for quick exam preparation. In very less time you can cover the whole syllabus, you can get perfect with the complete subject and you can give your best in your exams. If you want those notes, text me on my Instagram. My Instagram ID is Learn with Sahira. Drop me a message, want notes along with your group and semester. I will be giving you the access for all subjects, including RDBMS notes, which are very easy, simple, and exam focused. I have included only the damn sure important questions with their easy, simple explanation answers. Ma, you will not find any irrelevant topic or unimportant question and answers. Only important ones, both the long as well as short important questions I have covered, targeting your paper pattern part A and part B. So you will be 100% prepared for your exams with those notes. If you want them, you can text me on my Instagram. But remember, there is a small payment. Very small payment, but definitely you will be seeing very big results with those notes. And only the students who need the notes should text me. So, keeping this aside, let us get started with our unit number 2 explanation. The first topic or the first question in unit number 2 is, what is file organization? Explain the file organization methods. Students, before going into the answer, let me say you already we have covered unit number 1 complete explanation. If you didn't watch that video, go to our channel playlist RDBMS semester 3. You will be finding that video, watch that video. So, students, now let us talk about file organization. What is file organization, ma? File organization means how data records are arranged and stored inside a file in a computer. Like it will tell us where data is stored and in which order so that we can find it quickly. फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डेटा को सही तरह अरेंज करना ताकि उसे बाद में हम आसानी से ढूंढ सके. ठीक है. Just like books are arranged properly in a shelf, which are easy to find, in the same way well organized files will help the computer read data faster. I hope you understood what is file organization. The best example is arranging the books in an order in a shelf to find it easier. Okay, in the same way, we will arrange all the files in an order, systematic way so that the computer can read the data faster. Whatever you have understood, you can write it on your paper. So, students, there are different types of file organizations. Okay, what are each and everything? Let us discuss. First one is sequential file organization. Ma. Here, the records are stored one after another in a proper order, like it is usually sorted using a key like a roll number or id. Ma, just example, roll number stored as 101, 102, 103 or 104, they will be in an order. Okay, like 101 will come first, then 2 will come second, then third will be coming next, like that in an order the files will be stored. That is why the name itself is saying us sequential file organization, one after the other in an order. Advantages will be, they will, it will be very simple, ba, and it is good when we want to read all records in order, but the disadvantages can be, it is slow to search one record. Okay, and also hard to insert a new record in the middle, क्योंकि अब ये ऑर्डर रहता ना 101, 102, 103, 104, यहाँ पे 103 और 104 के बीच में मैं 105 को लाके नहीं बिठा सकती क्योंकि ऑर्डर रहता. और ये सब जो ऑर्डर में है, अब उसमें एक 115 को ढूंढना बोले तो मैं ऑर्डर से चेक कर लेते जाना 115 दिखना बोले तक, तो हार्ड रहता सर्च करना. And also it will delete the records cleanly, like
इट इज हार्ड टू डिलीट द रिकॉर्ड्स एक्चुअली। अपन इसको क्लीन नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। डेटा को लाइन में रखना बिल्कुल क्यू की तरह इज नथिंग बट सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव डायरेक्ट और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन में इट यूजेस ए हैश फंक्शन। ओके, hash function, it uses it hash function to directly jump to the records location, so no need to read real records. Like if example we have rule number 50, direct location will be found. So it is very fast for searching, best for banking, ticket booking, etc. But it cannot search a range easily, and hash collisions can happen. अब यहाँ पे 1 2 3 4 अपन को देखते हुए जाना था जब तक अपना पर्टिकुलर नंबर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे अपन को जो भी नंबर होना है डायरेक्ट वो लोकेशन अपन को मिल जाता, फास्ट रहता। लेकिन यहाँ पे क्या होता बोले तो रेंज नहीं रहता, लाइक 50 से 60 के बीच का नंबर दो, या तो 60 के 70 के बीच में जो जितने भी फाइल्स है वो दे दो। ऐसा रेंज में काम नहीं करता। रेंज मतलब क्या भी नहीं, 1 to 10 को रेंज बोलते, 1 2 3 4 5 6 10 तक जो 1 से 10 तक नंबर्स है उसको रेंज बोलते। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फाइल नंबर अगर अपन दिए तो लाके देता अपन को, लेकिन रेंज में काम नहीं करता। एंड देन वी हैव इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इंडेक्स लाइक द इंडेक्स पेज ऑफ ए बुक। इंडेक्स में क्या रहता, नंबर रहता ना, 1 2 3 4। सो इंडेक्स इज क्रिएटेड इन इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हियर इंडेक्स विल टेल अस वेयर ईच रिकॉर्ड इज स्टोर्ड, लाइक 105 ब्लॉक 3 में है, 101 ब्लॉक 1 में है। सो इट इज फास्ट फॉर सर्चिंग मा, गुड फॉर लार्ज डेटाबेसेस। पेज नंबर कैसा रहते हैं आपके, तो हर एक फाइल को वैसा नंबर देके छोड़ देते, तो ये इजी हो जाता कि वो कहाँ पे है, सर्च करना इजी हो जाता। ठीक है, बिल्कुल किताब की इंडेक्स की तरह रहता माँ, पहले इंडेक्स देखो फिर पेज पे जाओ, पहले इंडेक्स देखो फिर पेज पे जाओ, वैसा। मतलब ये पेज नंबर नहीं बोल सकते अपन, इंडेक्स रहता, देखो जो फर्स्ट पेज रहता कंटेंट्स का पेज, इंडेक्स पेज, सिलेबस पेज बोलते हैं अपन, वैसा समझो। Then heap file organization ma, records are stored anywhere here without any special order. Like new records are added to the end of the file. ये किधर भी कहाँ भी अपन स्टोर कर सकते, इन लोगों को ऑर्डर ही नहीं रहता। यहाँ पे ऑर्डर था ना सीक्वेंशियल में, यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, कैसा भी सेव करो, किधर भी सेव करो। अगर न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो लास्ट में ऐड होता, वो बीच में सामने ऐड नहीं होता, लास्ट में ही होता। इट इज इजी एंड फास्ट टू इंसर्ट द डेटा एंड गुड फॉर स्मॉल और टेम्पररी फाइल्स। ओके, बट हियर सर्चिंग विल बिकम स्लो अगेन, नो ऑर्डर नो सॉर्टिंग। सो जिस जगह स्पेस मिले रिकॉर्ड रख दो हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। देन वी हैव क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, रिकॉर्ड्स ऑफ रिलेटेड टेबल्स आर stored close to each other, like if that are joined data can be read quickly। एग्जाम्पल देखो माँ, एक स्टूडेंट का पर्सनल इन्फो है समझो, और स्टूडेंट का कोर्स इन्फॉर्मेशन है समझो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट की कोर्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों को मिला के क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन अपन बोल सकते हैं। तो दोनों को मिला दे रहे, तो ये दो ऑपरेशंस को ज्वाइन करने में हेल्प होता। लाइक एग्जाम्पल आप लोगों का डिटेल्स है, आपका कोर्स बीकॉम कंप्यूटर्स के है ना, बीकॉम कंप्यूटर्स कोर्स के डिटेल्स है। आपके पर्सनल डिटेल्स और आपके कोर्स के डिटेल्स को जब प्लस ऐड कर देते तो उसको क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इट इज एज सिंपल एज। then we have defined normalization, explain I sorry 1NF 2NF 3NF and BCNF. This is a really very important question, most repeated question and the most expected question. Okay, definitely you need to be perfect with this. Okay, listen to me carefully. Just by listening and giving a reading in my notes will be more than enough. Okay, listen to me carefully, give a reading in my notes. The students who have taken my notes, for you it is really very easy to go with this answer or any answers ma, because the answers are really very easy and in detail. Anyway, talking about the normalization ma, normalization is a method used in DBMS to organize the data properly in tables. Like the purpose will be to remove repeated data, duplicate data नहीं रहना, या तो confusion avoid करने के लिए, गलतियां reduce करने के लिए, टेबल्स को नीट और सिंपल रखने के लिए,
और सर्चिंग को इम्प्रूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन बेसिकली यूज करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि डेटा को सही तरह से अरेंज करना एंड डुप्लीकेट डेटा को हटाना। इट इज एज सिंपल एज दैट, टू अरेंज द डेटा प्रॉपरली एंड टू रिमूव द डुप्लीकेट डेटा। अरेंज करना डेटा को प्रॉपरली, और जब अपन डेटा को डुप्लीकेट्स जो भी है वो हटा रहे, तो दैट इज नथिंग बट नॉर्मलाइजेशन। ओके, so students, when data is arranged properly, everything becomes clean and clear, right? So why we need one normalization? Already अपन देख लिए, डुप्लीकेट डेटा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता, तो उसको हटाने के लिए, और जो बड़े टेबल्स है, लार्ज जो टेबल्स है, उनको छोटा बनाने के लिए भी नॉर्मलाइजेशन अपन उस पे करते। when we have big tables, we will convert that big tables into small tables, okay, so that searching and updating big tables will take more time. But when we do searching and updating on small tables, it will become very easy. Data becomes inconsistent ma, like one place अगर अपडेट हुआ तो अनदर प्लेस अपडेट नहीं होता, तो एरर फॉर्म होता ना, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते। एनीवे नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप जितना भी समझे वो लिख सकते। नॉर्मलाइजेशन जब अपन डेटा को प्रॉपरली अरेंज करते, डुप्लीकेट डेटा को हटा देते, बड़े बड़े टेबल्स को छोटे टेबल्स में कन्वर्ट करते, तो उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते। फर्स्ट वी हैव वन एन एफ मा, हियर द रूल, रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन एन एफ को एक रूल है, क्या रूल है वो? ईच कॉलम मस्ट हैव ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू रहना एक कॉलम में। नो लिस्ट, नो मल्टीपल वैल्यूज इन वन सेल। टेबल मस्ट लुक लाइक ए प्रॉपर ग्रिड, ग्रिड मतलब रोस एंड कॉलम्स प्रॉपर रहना। एक सेल में सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, लिस्ट या मल्टीपल वैल्यूज अलाउड नहीं है, बोल सकते हैं अपन। लाइक बिफोर वन एनफ कोर्स इज मैथ और साइंस, टू वैल्यूज इन वन सेल, एक सेल में क्या है? टू वैल्यूज है, टू वैल्यूज नहीं रहना, यहाँ पे है ना रूल क्या है? एक कॉलम में एक ही वैल्यू रहना, मतलब एक सेल में भी एक ही वैल्यू रहना। ओके, तो यहाँ पे एक सेल है जो उसमें टू वैल्यूज है, सो दिस इज नॉट वन एन एफ। ओके, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये नहीं होता क्योंकि टू वैल्यूज है। आफ्टर वन एन एफ, each course becomes a separate row. So how it will be? Row 1 will be math, row 2 will be science. Getting my point? तो ये रूल अगर आप याद रख लिए तो एग्जाम्पल आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते। तो वाई वन एन एफ, इट मेक्स द डेटा क्लीन, और मल्टी वैल्यू डेटा जो है, इसको मल्टी वैल्यू डेटा बोलते हैं, दो बार, तो इसको हटाता और इजी टू सर्च भी रहता, ठीक है। देन वी हैव टू एन एफ, इट इज like before going into 2NF, remember that 2NF applies only when primary key has two or more columns. प्राइमरी की क्या है? ऑलरेडी मैं फर्स्ट यूनिट में बोली आपको, फर्स्ट यूनिट के एक्सप्लेनेशन में, कि प्राइमरी की वो वैल्यू है जो एक यूनिक वैल्यू है। प्राइमरी की मतलब यूनिक वैल्यू, जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, हॉल टिकट का नंबर हो गया। आपका हॉल टिकट का नंबर सिर्फ आपका है, दूसरे के पास वो हॉल टिकट नंबर नहीं रहता। आपका आधार कार्ड सिर्फ आपका है, दूसरे के पास नहीं रहता, तो यूनिक वैल्यू है ना, तो उसको प्राइमरी की बोलते हैं। तो ये 2NF कब अप्लाई करते हैं अपन? व्हेन द प्राइमरी की हैज टू और मोर कॉलम्स, ठीक है। एक प्राइमरी की को अगर टू कॉलम्स है या तो दो से ज्यादा कॉलम्स है, तो अपन ये यूज करते हैं, ठीक है, ये अप्लाई करते हैं। दिस टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पोजिट की। अगर प्राइमरी की दो पार्ट्स की हो तब 2NF लगता है, बस, ठीक है। तो रूल क्या है हमारा 2NF का? टेबल मस्ट ऑलरेडी बी 1F, 1F रहना, मतलब एक कॉलम में एक ही वैल्यू रहना, एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं रहना। सो 1NF रहना पहली बात तो, एंड देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। What is partial dependency now? If a column depends on only one part of the composite key, then it is called partial dependency। मा अगर कोई कॉलम सिर्फ की के एक हिस्से पर डिपेंड करे, दोनों पर नहीं, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी की, जहां पे दो कॉलम रहना या तो दो से ज्यादा रहना, तो यहाँ पे की भी एक हिस्से पर डिपेंड नहीं रहना, दोनों पर भी रहना, ठीक है। Then we have third normal form 3NF,
What is 3NF ma? Here rule. First let us talk about the rule. टेबल मस्ट ऑलरेडी बी 2NF. देख रहे हैं आप, 2NF रहने के लिए 1NF रहना जरूरी है, 3NF रहने के लिए 2NF रहना जरूरी है. टेबल ऑलरेडी 2NF में रहना और नो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी. अब ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी क्या है? व्हेन वन नॉन की कॉलम डिपेंड्स ऑन अनदर नॉन की कॉलम. एक नॉर्मल कॉलम अगर दूसरे नॉर्मल कॉलम पर डिपेंड हो तो ये गलत है. ठीक है. एक जो नॉर्मल कॉलम है, अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, मा ए बी है एंड बी सी है, दे शुड नॉट एग्जिस्ट इन द सेम टेबल. ए बी बी सी एक सेम टेबल पे नहीं रहना. ए बी सी रह सकता, दो बार बी नहीं रहना. समझ में आ रहा? ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी इसको ही बोलते. एक नॉर्मल कॉलम अगर दूसरे नॉर्मल कॉलम पर डिपेंड हो तो ये गलत है. ठीक है. ए बी सी रह सकता, ए बी बी सी बोल के नहीं रह सकता. ठीक है. देन वी हैव बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म. व्हाट इट इज? इट इज स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ 3NF अपन बोल सकते हैं. जो 3NF है उसका स्ट्रॉन्गर वर्जन है और डेफिनेटली इसमें 3NF होना जरूरी है BCNF में. एंड रूल क्या है देख लो. टेबल मस्ट बी 3NF एंड एवरी डिटर्मिनेंट मस्ट बी ए सुपर की. Like if a column determines another column ma, then that column must be a super key. जो कॉलम दूसरे कॉलम को कंट्रोल करता है वो सुपर की होना जरूरी है. ठीक है. सो ये जरूरी क्यों है? BCNF क्यों? मतलब ये स्पेशल केसेस जो 3NF सॉल्व नहीं करता, BCNF सॉल्व करता. तो इसके जो भी डिसएडवांटेजेस है इन पूरा करता मैं. ठीक है. इट विल रिमूव ऑल अनयूजुअल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स एंड ऑल. You just give a reading and no need to worry. Here I have given you the explanation in very short. Like explanation I have given you properly, but the content which you are seeing on the screen is not enough to put it on the paper. But as I already said you, I have made the notes. You can take those notes to get prepared for your exams. Easy, simple, and ready to use notes they are. For quick exam preparation, you can take those notes. Just text me on my Instagram. So here normalization ma, it will make the database clean, simple, and free from duplicate data, free from errors and all. So one NF क्या है? Multi-valued columns को हटाता. 2NF removes partial dependency. Here it is removes a transitive dependency. Here it removes advanced issues and makes table strongest. And then the last question is relational database integrity and types of keys ma. So what is integrity? Already we have talked about integrity in our unit number 1. So integrity means data must be correct ma, and data must be safe, and also the data must be consistent, same everywhere. इंटेग्रिटी का मतलब होता है डेटा हमेशा सही और मैच होना चाहिए. डेटाबेस इंटेग्रिटी प्रिवेंट्स मिस्टेक्स लाइक रॉन्ग डेटा, मिसिंग डेटा, अनमैच्ड डेटा, डुप्लीकेट और कंफ्यूजिंग डेटा. ठीक है. टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी है. फर्स्ट है एंटिटी इंटेग्रिटी. दिस रूल इज अबाउट द प्राइमरी कीमा. प्राइमरी की मैं यूनिट 1 एक्सप्लेन करते वक्त भी बोली कि प्राइमरी की यूनिक रहना, नॉट नल रहना. आपका हॉल टिकट नंबर यूनिक रहता, जीरो मतलब कि नल रहता, मतलब जीरो भी नहीं बोल सकते नल को. नल मतलब बिना कुछ रहे रहता आपका हॉल टिकट, बिना कुछ रहे आपका हॉल टिकट नंबर नहीं रह सकता. तो यू यूनिक रहना, नॉट नल रहना. तो प्राइमरी की कभी खाली नहीं होती और दो रिकॉर्ड्स की प्राइमरी की सेम नहीं होती. ठीक है. To it is to identify each record correctly. Then we have referential integrity ma. This rule is about foreign keys. Okay. A foreign key in one table must match an existing primary key in another table. अगर आपको sequel मालूम है तो ये keys आपको आराम से आ जा सकते, समझ में आते. ठीक है. स्टूडेंट्स फॉरेन की को दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच होना जरूरी है. ठीक है. आपको फॉरेन की क्या है मालूम? नहीं मालूम. प्राइमरी की क्या है मालूम हो गया ना. प्राइमरी की मतलब नॉट नल यूनिक रहना एक. तो टेबल 1 है, टेबल 2 है. समझो टेबल 1 की जो प्राइमरी की है, जब अपन वो प्राइमरी की लेके जाके टेबल 2 को लगा रहे तो वो फॉरेन की बन जाती, क्योंकि एक टेबल के पास से दूसरी टेबल के पास आ रही ना. तो ये फॉरेन की जो है दूसरी टेबल की प्राइमरी की से मैच होना. ये जो प्राइमरी की है दूसरे टेबल को जाके लगा रहे, कब लगा रहे?
क्योंकि ये सेम है बोल के लगा रहे। अब which फॉरेन की को प्राइमरी की से मैच कर रहे तो वो मैच नहीं हुए तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं बोलते अपन। डोमेन इंटीग्रिटी में it controls the valid values, like each column should contain only valid data, like according to the data type, range, rules. Example, age cannot be negative. Age negative हो सकती, नहीं हो सकती, 0 या -10 -20 ऐसा बोल सकते, नहीं बोल सकते। एंड मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 and 100। मार्क्स भी अपन नहीं बोल सकते ना 1000 है, 2000 है मार्क्स बोल के। और फोन नंबर डिजिट्स में ही रहता माँ, फोन नंबर ABCD JKLM ऐसा रहता नहीं रहता, फोन नंबर क्या डिजिट्स में रहता। तो हर कॉलम के लिए सही टाइप और सही रेंज का डेटा होना जरूरी है। ओके, इट इज टू अवॉइड रॉन्ग और इम्पॉसिबल वैल्यूज। यूजर डिफाइंड इंटेग्रिटी में these are extra rules made by users or organizations, like fee must be paid before issuing hall ticket, एम्प्लॉय मस्ट अपडेट प्रोफाइल एवरी ईयर। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं। बेसिकली 3 आर द डैम श्योर। द फोर्थ वन आपको जरूर लिखना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा रूल्स अपन बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ कीज, प्राइमरी की ऑलरेडी अपन बात करें, फॉरेन की के बारे में भी ऑलरेडी बात करें, कैंडिडेट की के बारे में नए बात करें। कैंडिडेट की मीन्स ऑल पॉसिबल कीज दैट कैन बी चूजन एज प्राइमरी की। rule number and email can both uniquely identify a student, right? So both are candidate keys अपन बोल सकते। alternate key में candidate keys that are not selected as primary key, like if a roll number is chosen as primary key, email becomes alternate key। ठीक है, यहाँ पे ईमेल और रोल नंबर दोनों का यूज कर रहे तो कैंडिडेट, यहाँ पे दोनों में से किसी एक का चूज कर रहे तो उसको बोलते हैं अपन अल्टरनेट, दूसरा जो है बच के। कॉम्पोजिट की में एक की मेड यूजिंग ओनली 2 और मोर कॉलम्स, दैट इज कॉम्पोजिट की। देन वी हैव सुपर की में any combination of columns that uniquely identifies a row. It may include extra columns as well. देन वी हैव यूनिक की, यूनिक वैल्यूज रहना और नल वैल्यूज नहीं रहना उसको यूनिक की बोलते। सो स्टूडेंट्स, इंटेग्रिटी कीप्स द डेटाबेस करेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड, सेफ एंड कंसिस्टेंट, वी कैन से। So this was the explanation of unit number 2. Let us meet in the next video, which is unit number 3 explanation. If you want the notes, you can text me on my Instagram, learn with Saira. Drop me a message, want notes with your group and semester. I will be giving you the access, but remember there is a small payment. If you're having any doubts, let me know in the comment section. All the very best. Bye bye.